previously we learned about a one chapter named addition, right? Now we are going to learn a next thing. For example, I have two markers. मेरे पास दो markers हैं. And I gave one marker to you. मैंने आपको एक marker दे दिया. Now how many markers I have? दो में से one. Very good. Okay, mute yourself. Mute yourself. Now I have 25 markers. I have 25 markers and I gave you 20 markers. मेरे पास 25 markers है, उसमें से मैंने आपको 20 दे दिया. Now, how many markers do you need? 5. कैसे पता चला? नहीं, कुछ भी लिखना होगा मैं इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दूंगी. किसी को कुछ नहीं लिखना. आपको कैसे पता चला कि अभी मेरे पास सिर्फ 5 मार्कर्स ही रहेंगे? ओके, चलो ये तो थोड़ा स्मॉल नंबर है. नाउ आई हैव 126 markers. I have 126 markers. From that, I gave you 83 markers to you. 126 में से 83 मार्कर्स मैंने आपको दे दिए. अभी मेरे पास कितने मार्कर्स रहेंगे? How many markers remaining with me? हाँ, चलो आंसर नहीं पता तो मुझे ये बता दो मैं क्या करूँ. What should I have to do? Then I get the answer. Huh? 9, 1, 2, 3. I want the answer. Just tell me. Mute yourself now. What I asked, first listen the question carefully. मेरे पास 126 मार्कर है. I have. मेरे पास 126 markers है. उसमें से I gave you 83 markers to you. उसमें से मैंने 83 markers आपको दे दिए. 126 थे, उसमें से 83 मैंने आपको दिए. तो अभी मेरे पास कितने मार्कर्स रहेंगे वो पूछ रही हूँ मैं. आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? 43. हाउ? ऐसे क्यों 43? 199 नहीं आएगा. 43 कैसे आया? क्या किया आपने? तो आंसर 43 आया. माइनस किया. वेरी गुड. You are doing a minus means you are doing a subtraction. 126 minus 83. I want to know only this thing. कि आप क्या कर रहे हो जिससे आपको आंसर मिल रहा है. You are doing the subtraction. So 6 minus 3, 3. 2 minus 8, you cannot do that. So we are taking a carry. Sorry, borrow. 12 minus 8, 4. So answer is 43. So our next chapter is we are going to learn chapter number 3, subtraction. Yes. Write down the head. कुछ भी लिखना होगा मैं इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दूंगी. ये चीज मैं बार बार नहीं
कुछ भी single word if you have to be right na, then I told you open your notebook and write down. Yes, textbook में कहाँ जगह है? Open your notebook and write down. हाँ, ये भी चीज हर क्लास में नहीं पूछनी है निवान और अपने आप को म्यूट रखना है. So our next chapter we are going to learn that is the subtraction. So firstly, I gave you one example. 126 minus 83 equals to 43. जैसे एडिशन में एडेंड होते थे, when we are added two addend then we get the sum. जब हम दो addend को ऐड करते थे तब हमें sum मिलता था, right? So like that, when you are doing a subtraction, yes, that is a particular name of numbers. First number is called minand. First number. Yes, yes, yes. First number is called minand. This is the symbol of subtraction. Minus is the symbol of subtraction. Second number, ये लिखना है नोटबुक में चैप्टर नंबर 3 नए पेज से हेडिंग डालनी है सब्ट्रैक्शन. फिर आपको ऐसे लिखना है 126 माइनस 83 इक्वल्स टू 43. ऐसे आप लिखोगे. फिर आपको लिखना है 126 इज कॉल्ड द माइनस. माइनस द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन. बोलो बोलो. हाँ, ये चीज आप दूसरी बार पूछ रहे हो. अभी आगे निवान ने पूछा था तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि किसी ने कुछ पूछा और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट नहीं होना चाहिए. मैं नहीं बोलूंगी ये चीज बार बार. हाँ, ये मैं भेजने वाली हूँ. अब से कोई भी नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन तो नहीं ही पूछेगा कि मैम आप इसका फोटो भेजोगे, मैम आप इसका वीडियो भेजोगे. दोनों चीजें मैं भेजती हूँ. आपको फोटो और वीडियो से क्या मतलब? अभी आप पढ़ रहे हो ना, लिख सकते हो ना, लिखो. जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए मैं भेजने वाली हूँ, तो बार बार एक चीज क्यों पूछनी है? This is 83 is called the subtrend, and when you got the answer, that is called the difference. That thing you already learned in the class 2. ये already आप class 2 में सीख चुके हो. Parents are disturbing. Hitting the number from which another number is subtracted. नंबर जिसमें से हम दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, that is called to minor. नहीं दिखाई दे रहा? I will share the photo, just listen to me. Second, the number we are which is subtracting from number. जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 83, that is called subtract. And whenever we got the answer of subtraction, that is called the difference. Already that thing you are learned in the class 2. आप already subtraction chapter class 2 में सीख चुके हैं. So today we are just do the quick revision of the chapter that you learn in the class 2, and from that we also solve the exercise. Till here you have to be only right. Now I am writing some of the examples. Don't write that example in your notebook. वो examples आपको notebook में नहीं लिखने हैं. Clearly मैं बोल रही हूँ. अब कोई नहीं पूछेगा मैम लिखना है कि नहीं लिखना.
Listen to me. I am writing. I am going to show you some of the example of subtraction that you learn in the class 2. Don't be write in the notebook. वो आपको notebook में नहीं लिखना है. Okay. So let's start examples. You in the class 2 you are learning the 3-digit numbers, right? So we are seeing some of the example of 3-digit numbers. 426 minus 112. 426 minus 112. So अब जैसे हम एडिशन में करते थे, firstly we are arranging them according to the places, then we are start the addition from the ones place, then tens, then hundred and the thousand. Same thing you have to follow for the subtraction. You have to be firstly arrange these numbers according to the places. 100, tens and 1. This is the 3-digit number. That's why. After that, you have to be start subtraction from the ones place, then tens and the hundred. So let's see how can you do that. So firstly, 426 minus 112. Ones, tens and starting the subtraction from the ones place. हाँ बोलो. ये नहीं लिखना है. 6 minus 2, 4. 2 minus 1, 1, 4 minus 1, 3. So your answer is 314. This is the way how can you subtract. And this is the example of without regrouping, जिसमें आपको borrow नहीं दिखता है. You cannot see your any single borrow that you have to take from the previous number. Please mute yourself. Second example, that is of the with regrouping, means with a borrow. 529 minus 286. 529 minus 286. Firstly, arrange them according to the places. Then decide what should you have to do. 529 minus 286. Ones place, tens, and the hundred. So according to the rule, you have to start from the ones place. 9 minus 6. 9 minus 6. 3. Now, 2 minus 8. You have to subtract the 8 from the 2. यहाँ पे माइनस 2 है, तो आप ऐसे नहीं करते चलो 2 में से तो 8 नहीं हो सकता तो हम 8 में से 2 को निकाल दें. Don't do that. You have to be subtract 8 from 2 only. यहाँ पे माइनस 2 है, आपको याद रखना पड़ेगा. तो we cannot subtract the 8 from 2 as 2 is the smaller than 8. So what should you have to do? You have to take a borrow from the previous number. जैसे एडिशन में क्या करते थे, अगर 2 डिजिट आ जाए तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते थे, उसको हम एक ऐड करते थे. तो वैसे ही अभी हमारे पास नंबर नहीं है तब क्या करोगे? You have to take a borrow from the previous number. So firstly, for the taking a borrow previous number, just cut the number, write down the same number as above. यहाँ पे जो नंबर है वो ऐसा का ऐसा लिखना है. अभी आपको कैरी किसके पास से लेनी है? प्रीवियस नंबर से. तो कैसे लोगे? यहाँ से एक कैरी आपको लेनी है. 5 means what? 5 means 4 plus 1. 5 means 4 plus 1. तो ये जो 1 है आपको दिख रहा है, ये इसको दे दो और बचा क्या? 4. तो यहाँ पे लिख दो. Done. हो गया कैरी फॉरवर्ड, सॉरी बोरो. 12 minus 8, 4, and 4 minus 2, 2. Answer is 240.
Now I am requesting to every student, please open your notebook and textbook both. Open the page number 38 in your textbook. We are going to solve exercise 3.1. यार नहीं है तो पहले बोल दिया था, देखना है सिर्फ, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करना। बाकी से ही किसने पूछा? रिमूव कर दूंगी फिर। Write down the heading in the notebook. Exercise 3.1. Question number 1. Subtract the following. Write down in the notebook only. No need to open. You have to just look on the textbook but write in the notebook. Mute yourself. Okay, we are doing the one thing. I will just show you with the share screen. Please sit with your textbook. In the exercise 3.1, A is 165 minus 153. Ones, tens, hundred. So starting from the ones place, we have to subtract from the ones place 5 minus 3, 2. Then tens place subtraction 6 minus 5, 1. And 100 place subtraction 1 minus 1, 0. So your answer is 12. Complete it fast as you can. We don't have a time, so you have to be do fast as you can. Otherwise you can be do now in the textbook, then write down in the notebook. Then b is your, huh? 39 पेज मैंने बोला ही नहीं, 38 बोला, तो 39 कहाँ पहुंच गया? मैं 38 सॉल्व करवा रही हूँ तो सबका ध्यान 38 पे होना चाहिए। एक्सरसाइज 3.1, बी इज योर होमवर्क। ऐसे ही मैंने जैसे लिखा है वैसे ही लिखो, क्यों हटाना है? पता तो चलना चाहिए ना किया है कि नहीं किया, कि ऐसे ही डायरेक्ट आंसर लिख दिया। फिर आंसर में तो हम 12 ही लिख रहे हैं ना, मैंने लिखा 0 12 वहां पे। बी इज योर होमवर्क। सी इज 817 minus 301. Places ones, tens, hundred. Start the subtraction from the ones place. 7 minus 1, 6. Tens place subtraction 1 minus 0, 1. Whenever you subtract any number from 2 0, then you got that answer. Last, 100 place subtraction 8 minus 3, 5. Answer is 516. Write it down. Dhruvansh, what are you doing?
ओके, डी इज योर होमवर्क। डी आपको खुद से सॉल्व करना है। ये पूरा क्लास 2 का रिवीजन ही है, तो आपको तो खुद से सब कुछ सॉल्व कर देना चाहिए। हम्म, वेरी गुड। ई, डी इज योर होमवर्क। ई 649 minus 215, ones, tens, 100. Okay, 9 minus 5, 4. 4 minus 1, 4 minus 1, 3. 6 minus 2, 4. Answer is 434. जल्दी से करो। I have a next class also. Now F, G and H is your homework. As solved A, C and E. Rest of is your homework. B, D, F, G and H. B, D, F, G and H is your homework. In the question number 1, B, D, F, G and H is your homework. In the question number 1, B, D, F, G and H is your homework. Now question number 2, arrange the numbers vertically in a column and subtract. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ऑलरेडी आपको वर्टिकली अरेंज करके दिया हुआ था, डायरेक्ट आपको सब्ट्रैक्शन करना था। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपको फर्स्ट वर्टिकली कॉलम में अरेंज करना है, फिर उसको सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर बी। A 364 minus 218. So first what should I do? I will arrange them vertically. Minus 218. Write down the places ones, tens and 100. So as per the rule, we have to do the first subtraction from the ones place. 4 minus 8. We cannot subtract the 4 and 8. So what should we have to do? We have to take a borrow from the previous one. So write down 4 as it is and take a one borrow from the 6. So here there will be a 5. 14 minus 8. 14 minus 8. 6. 5 minus 1. 4. 3 minus 2. 1. Your answer is 146. Okay. B is your homework. C we are going to solve. C 748 minus 265. So first we will be arrange it. 748
minus 265. So first write down the places ones, tens and hundred. Then now 8 minus 5 कितने होंगे? 8 minus 5 3. Now 4 minus 6, sorry, 4 minus 6. 4 is the smaller than the 6, so we have to take a borrow from the previous one, 7. So here don't be speak in between. 4 as it is, and in take a one borrow from the 7, and here write down the 6. 14 minus 6, 8. 6 minus 2, 4. Answer is the 483. B and E is your homework. जिसका हो गया वो सॉल्व कर सकता है. D and E is your homework. I am going to solve the F. जिसके पास नोटबुक नहीं है वो रफ में भी लिख सकता है. If the F 634 minus 207. First arrange them vertically. 634 minus 207. Ones, tens, and hundred. Mute yourself. Parents, don't be disturb us. So we will be start from the ones place subtraction. Please mute yourself. 4 minus 7 we cannot subtract as 4 is the smaller than the 7. So we have to be take a borrow from the 3. 4 as it is, take a 1 borrow from the 3, write down 1 here, and in place of 3 write down 2. Now 14 minus 7, 7. 2 minus 0, 2. 6 minus 2, 4. Answer is the 427. Complete fast. Students who are completed F, they will be try to solve the G. बोलो क्या हुआ? वो आपका नेटवर्क इश्यू होगा. G 846 नहीं दिख रही. ये तो रिवीजन ही है क्लास 2 का. खुद से कर लो अगर आपको नहीं ही दिख रहा. 487. G 846 minus 487. ये जो सिंबल्स मुझे दिख रहा है ना आपके नेम के पीछे,
नेक्स्ट टाइम से दिखे तो क्लास से निकाल दूंगी. I don't want to see such type of symbols that you are putting. Arrange them vertically. 846 minus 487. Okay, so start from the ones place. 6 minus 7. 6 is smaller than the 7, so you have to take a borrow from the previous number. So here write down 6 as it is and take a 1 borrow from the 4 and write here a 3. Now 16 minus 7. 16 minus 7. Please mute yourself. 16 minus 7, 9. Now tens place subtraction. 3 minus 8. As you know, 3 is the smaller than 8, so we cannot subtract it. So we have to take again a borrow from the previous number. वापस से हमें प्रीवियस नंबर से बोरो लेना पड़ेगा. जैसे आपने 6 को कट करके ऊपर 16 लिखा है, वैसे ही आपको अभी नंबर एज्यूम करना पड़ेगा 3. यू कैन नॉट टेक अ बोरो अगेन फॉर अ 4. आप 4 के लिए बोरो नहीं लोगे, अभी आप 3 के लिए बोरो ले रहे हो. तो आप क्या करोगे? 3 के लिए बोरो लिखोगे, कट द 3, write down as it is and take a borrow from the 8, and here is 30. Now subtract 13 minus 8. अभी आपको क्या करना है? जैसे पहले करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन. 13 minus 8, 5. Now 100 place subtraction. 7 minus 4, 3. Answer is the 359. H is your homework. If you are not completed, I will be share the screenshot of all this. Please mute yourself, parents. Carefully. Okay, so I'm going to instruct you that tomorrow you have a test. आपका कल टेस्ट होगा that you already learned in the class 2 in the subtraction chapter. जो भी चीज आप subtraction chapter में सीख चुके हो, ऑलरेडी आपने सीखा हुआ ही है, उसका टेस्ट होगा कल. मीन्स सच अ स्मॉल रिवीजन. अगर आपको क्लास 2 का सब्ट्रैक्शन याद होगा तो आप क्लास 3 का इजीली कर पाओगे. So that's why I'm going to take a simple and small test, 10 mark test, that you have to be attend via Google form, right? So tomorrow there will be a test for a class 2 revision of maths chapter subtraction. Understood everyone?